Good morning, everyone. Parag Raul, on behalf of Anjuman Islam's Kalsikar Technical Campus, welcome each one of you for IIC Impact Lecture Series 2 webinar on how to raise funds for your startup ideas. This webinar has been organized by IIC of AIKTC and it has been sponsored by MOE's Innovation Cell and AICT New Delhi. We are very happy to have Mr. Sagar Ranshoor as an expert for today's session. We welcome you, sir. We also wish to welcome Dr. Mujib Tamboli, IQAC coordinator, Dr. Firoz Khan, convener of IIC, Dean and HODs of respective schools and department. But before we start today's session as a part of tradition of AIKTC, let us begin the session by listening to verses from Holy Quran. Over to you, Firoz, sir. Hello, am I audible? Yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Thank you, Parag sir. Yeah, thank you, sir. Now I request Dr. Firoz Khan sir to introduce to our expert for today's webinar. Over to you, sir. Thank you, Parag sir, for giving this opportunity. It is my honor to introduce today's speaker, Mr. Sagar Ranshoor. Mr. Sagar is a renowned public speaking coach and startup consultant based out of Mumbai. He is certified by University of Cambridge, specialized in field of business communication, and also holds a Bachelor of Mass Media degree from University of Mumbai. With an extensive experience of more than 7 years in the field of public speaking, Sagar has bagged more than 10 awards, gave more than 200 talks, and has an experience of speaking in front of more than 25,000 people. He has been engaged anchor for Chief Minister of Maharashtra and Vice President of India at just age of 21. He has been invited as guest speaker by more than 100 companies, including top organizations like St. Gobain, Lokmat, IIT Mumbai, through which he has helped more than 5,000 people to take their communication skill to next level. He also acts as a head of community and partnership at CIBA, Navi, Mumbai. As a serial entrepreneur, he is the founder of Akin Food and Beverages, a quick service restaurant brand. He also mentors a few startups under the umbrella of CIBA. Recently, just at the age of 27, Sagar was invited to share his success story and inspire millions on the prestigious stage of Joe's Talks India. With this brief introduction, I extend my warm welcome to Mr. Sagar Ranshoor and request him to start with this session. It is over to you, sir. Thank you, Parag sir, for starting the session. Thank you, Firoz sir, for the wonderful introduction. I'm sure that majority of the students would have been a little confused. इसके तो प्रोफाइल में सब पब्लिक स्पीकिंग के बारे में हाउ कम ही इज टॉकिंग अबाउट रेजिंग फंड्स इन स्टार्टअप हाउ कम ही is called as an expert speaker to speak on raising funds. So before we start, respected dais, respected all the teachers, respected all the dignitaries of the college and my dear students, before we start today's session, I want us to get with me on a deep dive where we understand how I got to know about fundraising and how I got to know about startups and how my journey began. I'm 27-year-old. My name is Sagar Ranshoor. I'm based out of Mumbai, and I'm very thankful
to your college, sir, first of all. The reason is because when I was in college, my college also used to arrange this kind of lectures, this kind of lecture series on various topics. Sometimes there used to be something around public speaking, sometimes there used to be something related to startup, sometimes there used to be something related to entrepreneurship. And to be very, very honest with you people, uh, the lectures where, what we regularly have, even that did not teach me so much as this extra value adding lectures taught me. To be very specific, in a very layman's language, uh, बुक्स ने ना मुझे मुझे क्या आगे क्या करना है, क्या क्या टेक्निकल चीज़ें होती है, ये सिखाई। मगर ये जो सारे लेक्चर्स थे, ये जो सारे लेक्चर सीरीज अलग 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 तरीके के हुआ करते थे, इन लेक्चर्स ने मुझे बताया कि इस दुनिया में जीते कैसे, इस दुनिया में काम कैसे करना होता है, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, आज हमको कौन से स्किल्स सीखनी ज़रूरी है। एंड समवेयर डाउन द लाइन आई ऑल्सो बिलीव दैट just because my college conducted such kind of series, I am able to do what I am able to do today. All my achievements, whatever Firoz sir spoke about, कि इन्होंने ये किया है, जो स्टॉक्स दिया है, वाइस प्रेसिडेंट को एंकर किया है, इतने की नोट्स दिए हैं, this would have not been possible if I would have been a guy who just sits in classroom and studies. And I really, really want to congratulate you. There are, I believe, 40 people here today. Majority of them are going to be students. I'm very happy to see that you people are like me. I was willing to go and sit for such kind of lectures because I was willing to learn. I was willing to grow. That desire was there in me. And if you people are coming here on a Saturday morning, 10:30 for a lecture series, that means that I can see somewhere down the line the same zeal, the same wish to do something big in life also lies in you. And that is one of the reasons why I want to congratulate you. Ladies and gentlemen, my when I was in college, okay, so let me put it this way. Let us start understand a little bit about how my journey has been, and then we'll come to the topic. Because in my journey, I will not only tell about how good things I've done. I'll also speak about what are the mistakes that I've done, and I think that mistakes will help you not to repeat the same mistakes again. That's the reason I want to share about journey in quick. So when I was in first year of my college, I was a guy who was good with talking to people. Good as in I was, when we used to be in a group, I was the one who was the talky guy in the group. And I was in the first year of Bachelor's of Mass Media. तो पहले 6 महीने में पता चल गया था कि अरे I need a reason to get out of the class. I don't know whether I can use the word bunk, but I needed a reason to go out of the class. But then there was a strict rule in our college that if you don't have attendance of 75%, you cannot attend the exam, and all of that things were there. So I was thinking कि क्या कर सकते हैं, what should we do so that we get a chance to get out of the class. And at that moment, I think it was the college started in June or July. In August 2nd or 3rd week, we get a notice in our class that there is something called as youth festival, and if anyone wants to participate in youth festival, they should give their names, and students who participate for youth festival will get some kind of concession in attendance. So I was very happy listening to that. अरे इसी चीज का तो हम इंतजार कर रहे थे. And I went. So beside the staff room, there was the list which was been put. How many competitions are there? What are the names of competitions and everything? And you have to go through the list and decide in which competition you want to participate. So I went to those
44 competitions. I went to 33 out of them. And trust me, I was in a situation when I was like, I cannot participate in any one competition out of them. I don't know dance, I don't know theater, I don't know singing, I don't know mime, I don't know music, I don't know to play musical instrument, I don't know singing, I don't know orchestra, I don't know skate, I don't know fine arts, I don't know drawing, I don't know pottery. I don't know anything. In what should I participate? So there were 43 competitions like that जिसमें मैं participate ही नहीं कर सकता था. And there was one competition like that जो word ही मैंने जिंदगी में पहली बार सुना था. And that word was elocution. 43 competitions समझे ही नहीं. एक है जो अब 44 competitions में से 43 competitions ऐसे जो आते ही नहीं है और एक ऐसा है जो समझा ही नहीं. So I went to my professor madam and I told her, madam, what is this elocution competition? I want to know. And she was like, it's very simple. You have to go on stage and you have to speak for 5 minutes, and a topic will be given, and you have to go and speak. So like, this is very simple. Just go and speak. ये तो बाय हाथ का खेल है हमारे. We'll go and we'll speak on stage, no problem. So next day, we got a 10 days time to practice it, and there was something called as grand rehearsal. Grand rehearsal is you have to present what you are going to present in the competition. So what you are going to present in the competition, you have to go and present in front of the principal madam. And once she sees that, she will decide whether you will go for the competition or not. So it was a very serious thing in our college. So I was called for the grand rehearsal, and fortunately, unfortunately, I cannot say, but I was called for the grand rehearsal in our college auditorium. So when I entered the college auditorium, there was pin drop silence there, and the entire college auditorium was warm. There were 250 students sitting there. Everyone pin drop silence. And the moment I entered the auditorium, my professor introduces me to the principal madam. Madam, ye Sagar hai, is into first year BMM, and he is going to represent our college for the elocution competition. I go on stage. For the first time in my life, I see 250 people sitting looking at me. There was someone on the left who had a timer in his hand. In the front line, there were all the professors. In the center, there was our principal madam. And the person with the timer goes like, Sagar, your time starts now. 5 minutes, 5 seconds happen. 10 seconds happen. 30 seconds happen. 1 minute. And I could not speak a single word on stage. My throat was dry. My hands were sweaty. My legs were shivering. My body was all sweaty. My body was all warm. And I was not knowing what is happening with me. I was just standing there. And I even forgot my name. I was not able to remember my name. I was speaking on stage for the first time in my life. And that was the day my friend pulled me out of the auditorium. He told me, Sagar, you should not do this. This is not meant for you. Speaking on stage, you need to be with that born talent of speaking confidently and effortlessly and all that thing. And somewhere down the line, just because I attended programs like this, I heard a lot of success stories of various people who used to come as guest speakers in my college. Whenever there is some kind of failure in life, you should not move back. You should fight the situation. You should, try to learn something out of it and do it again. And down the line, if you have this kind of attitude, you may win someday. That is where this kind of lecture series impacted my life. That day, I decided,
whatever happens, I am going to try it once again. I'm going to practice it again, and let us give it one more try. Rather than just leaving it all together, let us give it one more try. And from there, my journey of public speaking began. So that was first time when I went on stage, I could not speak a word. By second year, by third year, there was not one competition, one elocution competition where I am not the gold medalist. When I was in third year, any time if there's any elocution competition ka brochure, if any brochure comes to our college, that this is an XYZ competition, professor used to ask people, who is going from our college? Sagar is going. That means the gold medal is ours. So just because on the first day, I did not decide to quit, my entire life changed in the next 2 years. Simultaneously, university also gave me a lot of opportunities. College also gave me a lot of opportunities. In the second year, I got a scholarship from University of Cambridge, specializing into business communication. That was from Mumbai University. While I was in third year of my college, I was anchoring for the Chief Minister of Maharashtra. I was anchoring for the Vice President of India. And that time, there used to be 25,000 people in the audience, 20,000 people in the audience, 10,000 people in the audience. So when Chief Minister speaks, or when Vice President speaks, they don't have programs in auditoriums, they have programs in stadiums. So there, when I was 21, I was anchoring for programs like this. Now what happened is I wanted to make a career into public speaking when my college ended, and somewhere down there, and you need to take this decision कि आगे क्या करना है. I wanted to make a career in public speaking, but for example, if I want to become a lawyer, there are 10 lawyers around me whom I will ask how to become a lawyer, what are specializations, what should be done. If I want to become a chartered accountant, there are 10 chartered accountants around me. But I wanted to become a public speaker, and there was no public speaker around me. So whom should I ask was a big question. So what I did is, एक काम करते हैं, instead of wasting so much time and deciding what to do, by that time, let us do our masters. This is what I thought. And I went through the prospectus, Mumbai University masters का जो prospectus, I went through that just to check that what all degrees are there, what all I can do masters in. And I selected this is one course in which I will do my masters, and that course was public relations. The only reason I took admission for public relations is just because there was the word public. So I thought अगर public word है तो public से कुछ तो related होगा. Somewhere talking to public relations है ना, तो then building relations with public or something like that, like this is going to be there. And I think this is the best course for me. बाकी कोई भी course में nor there was speaking, nor there was public. And I took admission for that course. Fortunately, because because of all my achievements in my college, and because of all the external knowledge what I had, because I used to sit for lecture series like this. What happened is, on the first day itself, on the master's ka first day itself, I got a job opportunity, and I started working in a PR agency. So there were two things happening parallelly. One was me doing masters, and one was me working in a PR agency. So initially it was a lot of fun. That was my first job, and I was doing my masters. All of this was good. But down the line, 6 months down the line, things started becoming a little boring. Now there were reasons for that. One is एक तो जो मैं मास्टर्स की डिग्री में पढ़ रहा था, उसका और जो मैं काम कर रहा हूँ, उसका कुछ भी संबंध नहीं है. Both the things are moving in two different directions.
एंड वर्स्ट पार्ट वॉज मेरी मास्टर्स की डिग्री का और मैं जो काम कर रहा हूँ वो दोनों का जो मैं करना चाहता हूँ उससे कुछ भी संबंध नहीं है. आई वॉन्टेड टू गेट इन टू पब्लिक स्पीकिंग एंड पब्लिक रिलेशंस एंड पब्लिक स्पीकिंग हैड नो कनेक्शन. So 6 months down the line, it started getting a little boring. 8 or 9 months, 10 months down the line, I started getting frustrated. I wish that this is not something that I want to do, but then I don't know what should I do. All of this was a lot of confusion in my head going on. Uh, when I was in college, we had lectures on entrepreneurship and startups and all of that. So that was somewhere down the line, back of my head, that used to be there. मगर कॉलेज में जब भी सीरीज ऐसे होते थे या लेक्चर्स होते थे ना, तो जो 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 गेस्ट स्पीकर होते थे, they used to speak in a very difficult language, as in they'll come, they'll be like, so you people are future of our country, and you people are going to be job givers, and you people are going to be the taxpayers, and if you become a part of entrepreneurial ecosystem, you will be job givers and not job takers. तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता था, मगर समझ में कुछ नहीं आता था, just to be very very honest with you. And the worst part was कि just because वो चीज़ें सिर्फ हमने सुनी है, वो चीज़ें प्रोसेस नहीं हुई है. The reason why I speak in such a simple way, the reason why I use this kind of language is that because वो चीज़ें, ये सारी चीज़ें मैंने भी जब मैं कॉलेज में तभी सुनी थी, मगर वो चीज़ें प्रोसेस नहीं हुई कि मुझे किसी ने मेरे जैसे लैंग्वेज में नहीं बताया था कि इकोसिस्टम क्या होता है और कैसे रेज किया जाता है और कैसे स्टार्टअप स्टार्ट किया जाता है. अगर ये मुझे कोई मेरे लैंग्वेज में इतना सिंपल करके अगर बता देता ना, तो शायद मैंने जो गलतियां की वो मैं करता ही नहीं. एंड जस्ट बिकॉज देयर वाज नो वन फॉर मी, आई वांट टू बी दैट सोर्स वेयर आई bring all of this information in a very very simple layman language, in a language where students can understand this and process this and remember this throughout their life. So let us come back to the story. What happened is my frustration started getting increasing. This is not something I want to do and all of that. And one fine day, surprisingly, I get a message on my phone, on my WhatsApp, that there's a program on entrepreneurship. There is a program, but the image said, do you want to grow in your life? Do you want to fulfill your dreams? Do you want to do something extraordinary or something big in life? Do you want to live all the luxurious life and all that? If yes, this is a program what we are organizing, where we are going to teach you how to get into entrepreneurship. And if you wish to learn, you attend this program. So I was like, cool. Basically, Saturday morning, there's nothing to do. I was like, एक काम करते चलो, let's go. And I called one of my college friends. She was also interested. I motivated her कि अरे we'll be job givers. Come, we'll go. And fortunately, she also got motivated. So we went for the program. And when I sat for the program, so there were, I thought this is going to be some kind of simple, where people are going to speak and the same difficult language program that is going to be there. But when I went for the program, there were a lot of business owners who were speaking there as guest speakers. There were a lot of coaches who were speaking there. There were a lot of government authorities, IAS officers and IRS officers who were speaking on that stage. And while going through the program, as I was listening to stories of various business owners, I started getting motivated. Yes, this is the life that I want to live. This is, although there was a lot of struggle, entrepreneurship is not easy. So there was a lot of struggle and there was a lot of hard work what everyone did. But life was exciting and these people were living their life to the fullest, and these people somewhere down the line were successful. What I thought about success, अगर मुझे लग रहा था कि this is the real success for me, that I could see on stage, which was there with those people.
And in that program, I got motivated. Okay, so while the program is still going on, they announced uh, that if you want to get into entrepreneurship, we will help you and all of that. Before the program was still going on, and I had already sent my resignation letter. And my friend sitting beside me, she was shocked. "Arey, you have already shared the resignation letter." Yes, I don't want to do that. I want to do this. I want to get into entrepreneurship. I want to learn how it is, and I want to become an entrepreneur and all of that. I was highly motivated that time. Now, uh, when the program ended, while coming back, I also motivated my friend. You know why? She was also working at a good position. She was also earning well. But somewhere down the line, the wavelength was matching. That's the reason I also motivated her. Let us do this. Let us get into entrepreneurship. Let us do something together, and we will also make it big. And all of this is going to happen, and all that. I'm motivating her continuously. और मजाक की बात ये है ना कि that she was initially she was very rigid that you want to do all this, if you want to do, you do it by yourself. But because of my continuous effort in motivating and being behind her over a period of time, she also got motivated. Okay, chalo, let's do something together. Now when we decided what to do, when we decided, okay, we are going ahead with entrepreneurship, the question was, what is the business in which we should enter? Now, we did not have any business experience, nor we belong to any business community, nor we belong to any business family, nor anyone in our relatives and family and anywhere near to us are into business. So we did not knew how to do business. We did not knew uh, what business करे तो किसका करे. This also we did not have a clue. So while discussing with her, what happened is, she said, "I'm good into uh, making innovative products, that is food products. So I make various kind of fries, I make various kind of burgers and all that." And I was like, "I'm good into sales. I can speak to people. I can sell the products. Let us start a small cafe." This is what we thought. I think this is 4 years, 4.5 years down the line. So let us start a small cafe. And so we needed funds for that. When we took a estimation, it was around 7.5 lakh rupees what we needed if we want to start a cafe. Cafe as in not cafe. Cafe means a 100 square feet dukan. Okay, a small shop. If I wanted to start even that, we needed 7.5 lakh rupees funds for that. Now in that program, what we attended and I got motivated there. In that program, they said that if anyone out of you, if you want to get into entrepreneur, if you people want to get into entrepreneurship, get in touch with us. We will help you with various loan procedures that we have. There are government funds, there are loan facilities, schemes which are there for early stage entrepreneurs. If you want to get into entrepreneurship, you can contact us. We needed 7.5 lakh rupees, 8 lakh rupees, whatever the fund we required. So we started, I went, contacted back to them. I told them that I want to start my entrepreneurial journey. I want to, words, I used to use very heavy words. So I want to start my entrepreneurial journey and I want to get into this food business. So I need a loan for that. You guys help me, tell me what are the loan procedures are, what are the schemes that we have and all of that. And fortunately, I got a support from there. We submitted all the documents and we were behind them for a couple of months. And fortunately, we got an approval for our loan. And we started our first
business, which is that 100 square feet small shop, snacks corner. I cannot even call it a cafe. So we started with that 4.5 years back. I think we were 23 that time. And so over a period of time, so initially any business takes time to grow. On the first day itself, you do not have a good sale. So slowly and gradually, were coming. They were experimenting with the food that we are making, and they were loving the food. Slowly and gradually, the business was slowly, it was growing. And there was one twist in the story. पहले 6 महीने, just as my master's degree, पहले 6 महीने बहुत मजा आया, और उसके बाद it again started getting a little boring. Now the reason was अरे रोज यहाँ पे दुकान में आके खड़े रहना पड़ता है, दिन में 10 घंटा खड़ा रहना पड़ता है. You repeat the same thing again and again every time a new customer comes. So then slowly and gradually, sitting there for throughout the day, speaking the same script again and again and again and again, things started getting a little boring for me. कि क्या करे समझ में नहीं आ रहा. अभी एक तो जॉब छोड़ दी और ये कर रहे हैं, इसके लिए लोन ले लिया और अभी ये कर रहे हैं, तो इससे भी बोर हो रहे हैं. तो करोगे क्या? What is that one thing that you have to do? I was not able to figure it out. So what I thought is, see, ये एक दुकान में है ना, तो कुछ होगा नहीं. What we will do is we will raise funds. तभी न्यूज में ये सारी चीजें आ रही थी कि Swiggy has raised funds, Zomato has raised funds. There are other startups, different startups who have raised funds for their startup. And when I used to read all of this, I also used to get motivated. Okay, then if these people can raise, we will also go, we will also raise, and we will make this brand a big brand, and all of that is going to happen. So what I did is, just to understand this process, there was one person who was expert into startups. I called him and I told him, sir, I want to meet you. You try our food also, and we need your guidance to grow the business and all of that. And he came to the shop. He tasted our food. He was very impressed that you're making fantastic food. You're making good food. Now he said, what is the help that you require from me? What is the guidance that you require from me? तो मैंने बोला कि सर, आपको जो खाना पसंद आया, मैंने हाँ पसंद आया, तो अभी पैसे दे. तो वो बोले क्यों? तो मैंने बोला सर, अभी मैं ना रेस करना चाहता हूँ फंड, एंड करोड़ों रुपए रेस करूंगा और ये बिजनेस बहुत बड़ा बन जाएगा और ये सारी चीजें होगी. जैसे स्विगी जोमेटो ये सारे लोगों ने रेस किया है, वैसा आई ऑल्सो वॉन्ट टू रेस फंड्स. यू टेल मी व्हाट टू डू. तो बोले कि व्हाट डू यू कॉल दिस? तो मैंने बताया कि सर, ये मेरा स्टार्टअप है, जिस रेस्टोरेंट, ये मेरा स्टार्टअप है सर. और तुम कौन हो? मैंने बोला सर, मैं आई एम द सीईओ ऑफ दिस स्टार्टअप. और he started laughing, and I was not able to understand why this person is laughing. This is my startup, I am startup CEO, what's wrong in that? And he started laughing on me. So I asked sir कि सर ऐसा क्या हो गया, आप हंस रहे हो मेरे पे, what happened? Like, this is not a startup, इसको दुकान बोलते हैं, this is not startup. तो मैंने बोला सर, क्या आप ऐसा कर रहे हो? मैंने तो इंस्टाग्राम पे लिख दिया है स्टार्टअप फाउंडर, एंटरप्रेन्योर. तो बोले कि ये स्टार्टअप नहीं है, और मैं फाउंडर तो हूँ ना, मैं सीईओ हूँ ना. तो बोले कि डॉक्यूमेंट बताओ मुझे, किधर लिखा है तुम सीईओ? हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है क्या? बोला नहीं. तो तुमको डेजिग्नेशन है क्या तुम्हारा सीईओ ऑन पेपर? बोला नहीं. तो ये तुम बोला कैसे लेते हो खुद को सीईओ? तो मैंने बोला ये तोहफा हमने खुद को दिया है.
And he started laughing. He was like, तुम CEO नहीं हो, तुम दुकान, ये दुकान है और तुम दुकानदार हो. This is not a startup. और मैंने जितने सपने देखे थे ना कि मैं फंड रेस करूंगा और ऐसा हो जाएगा और वैसा हो जाएगा, फिर आगे जाके मैं तो करोड़पति बनने वाला हूँ, वो सारे सपने धीरे 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 करके टूट रहे थे. अभी मैंने उनको बोला कि सर फिर मेरी कहाँ गलती हो गई, कहाँ मैंने क्या गलत कर दिया, मुझे आप बताइएगा, यू नो हाउ कैन आई रिपेयर दिस मिस्टेक. He said कि you know I don't have time for all of this to sit with you and make you understand, because this is very very basic. What you can do is you can attend a few programs. So he suggested me a few programs on entrepreneurship. He told me you go and you attend those programs. There you will understand the basics of what is startup, how to raise funds, what is the right structure and right process. So you'll understand all of that. And fortunately, I took up a decision to learn this. And over a period of time, then you know the restaurant thing is still going on. We'll again continue this story at the end of the session. But this is where I understood, you know, I need to take help from professional people and learn it through talking to various experts. Fortunately, while my startup was still going on, while the lockdown came, I got an opportunity to work with an angel fund. Angel fund is a place where startups get investments. जो हमने शार्क टैंक देखा है, शार्क टैंक is a kind of angel fund where investors are called angels. They come as angels and they put money into your startup. I got a chance of working with an angel fund, and in that 1.5 years journey working with an angel fund, I met with 100 more than 100 investors. I spoke to more than 500 startup founders, and so there's something called a pitch deck, where that is a document which you show to your investor in order to ask for funds. And I you know, while being in this process, I saw more than 1000 pitch decks. I've studied more than 1000 pitch decks, and whatever I was learning in those lecture series where I was sitting, and the programs that sir suggested me, वो चीजें जब भी मैं पढ़ रहा था, and simultaneously यहाँ पे I am meeting founders, I am meeting investors, I am seeing pitch decks, I was able to relate that things कि ओ ये क्या कहना चाहते हैं और असल दुनिया में कैसे काम होता है. And in the next 1 hour, what I want to do is exactly this. I want to explain you the step-by-step system of how, what is basically called a startup, how to raise funds, and what is the right process to do that. Okay, so let us pause the story for a little. You know, we'll talk a little technical, so that कल को अगर आप स्टार्टअप फाउंडर्स बनते हो और अगर जब भी आप इस स्टार्टअप की दुनिया में जाते हो, तो आप है ना ये बड़े बड़े जो हाई फंडू शब्द है ना, उससे डरने नहीं चाहिए. उनके मैं तुमको अभी मतलब बता देता हूँ. मतलब उनके बहुत सिंपल है, मगर वो वर्ड्स, वो कीवर्ड्स यूज करते हैं लोग, और एक साधारण सा स्टार्टअप फाउंडर वो देख के डर जाता है, अरे अरे इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है. तो ये जो सारा कंफ्यूजन है ना, उसको हम बहुत ही सरल सिंपल लैंग्वेज में जानने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो अगर आपको कुछ पेन पेपर कुछ ग्रैब करना है, मैं 10 सेकंड्स का टाइम दे रहा हूँ, अब ले लीजिएगा. Okay.
सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि स्टार्टअप मतलब होता क्या है। क्या हर एक बिजनेस स्टार्टअप होता है? और अगर हमको स्टार्टअप बनना है तो कौन सी चीजें हमें होनी चाहिए जिसके बलबूते पे हमको स्टार्टअप बुलाया जा सकता है? ठीक है। सो देयर आर थ्री काइंड ऑफ बिजनेसेस। नंबर वन इज ट्रेडिशनल बिजनेस। ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब क्या? ट्रेडिशनल बिजनेस मतलब दुकानदार व्यवसाय। अगर आपने कहीं पे एक शॉप देखा, ग्रोसरी का दुकान ट्रेडिशनल बिजनेस, साड़ी का दुकान ट्रेडिशनल बिजनेस, जूस का दुकान ट्रेडिशनल बिजनेस, कपड़े का दुकान ट्रेडिशनल बिजनेस। और अभी आप भी मुझे कुछ एग्जांपल्स दीजिएगा। आई एम ओपनिंग द चैट विंडो, वी विल आल्सो इंटरैक्ट व्हाइल स्पीकिंग। सो गिव मी 2-3 एग्जांपल्स ऑफ व्हाट ट्रेडिशनल बिजनेसेस आर। मैंने आपको बता तो दिया कि दुकानदार व्यवसाय। एंड व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर ट्रेडिशनल बिजनेसेस? हाँ, यू पीपल कैन राइट इन चैट या फिर आप माइक अनम्यूट करके भी बता सकते हो। ओके, मोबाइल रिपेयरिंग शॉप ट्रेडिशनल बिजनेस, वेरी गुड रहमान, वेरी गुड। एंड व्हाट डू यू थिंक? ग्रोसरी स्टोर, वेरी गुड, ट्रेडिशनल बिजनेस। गराज, वेरी गुड हजमा हमजा। रेस्टोरेंट बिजनेस, मेरा ही एग्जांपल, वेरी गुड, ट्रेडिशनल बिजनेस, करेक्ट। तो दुकानदार व्यवसाय मतलब क्या कि बिजनेस जो है ना वो किसी आदमी पे डिपेंडेंट है, ओनर पे डिपेंडेंट है। ऐसा बिजनेस जो होता है दैट इज ट्रेडिशनल बिजनेस। सेकेंड टाइप ऑफ बिजनेस इज सेमी ट्रेडिशनल बिजनेस। ऐसा बिजनेस जो चलाने के लिए या जो बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लिया जाता है। और फॉर एग्जांपल LIC पॉलिसी का बिजनेस तो है ट्रेडिशनल बिजनेस ही, आपको जाके बेचना है। अगर आप बेचना बंद करोगे तो नहीं चलेगा, मगर वो पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स और ये सारी चीजों के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लिया है, वो बन गया सेमी ट्रेडिशनल बिजनेस। सिमिलरली एक नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर है ट्रेडिशनल बिजनेस, डी मार्ट। डी मार्ट में लॉजिस्टिक्स के लिए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, बिलिंग के लिए टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। तो वो ट्रेडिशनल बिजनेस को बढ़ाने के लिए उन्होंने टेक्नोलॉजी का हेल्प लिया और उसको सेमी ट्रेडिशनल बिजनेस बना दिया। मुझे कुछ एग्जांपल्स आप बताओ कि सेमी ट्रेडिशनल बिजनेसेस के और क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। स्टारबक्स, वेरी गुड, वेरी गुड। स्टारबक्स कॉफी शॉप नॉर्मल, उसका भी टेक्नोलॉजी का सपोर्ट ले लिया बिलिंग के लिए, लॉजिस्टिक्स के लिए और इन्वेंट्री के लिए, और स्टारबक्स बन गया चेन है, वेरी गुड। टैक्सी कैब एंड उबर सर्विसेज इज नॉट ए सेमी ट्रेडिशनल बिजनेस। क्यों? मैं आगे बताता हूँ आपको। जियो मार्ट इज नॉट ए सेमी ट्रेडिशनल बिजनेस, मैं आगे बताता हूँ। और बताइए, और कुछ नाम बताइएगा। नॉर्मल बिजनेस मगर चलाने के लिए टेक्नोलॉजी का हेल्प लिया है। मैकडॉनल्ड्स इज ए सेमी ट्रेडिशनल बिजनेस, एक्सीलेंट। नॉर्मल रेस्टोरेंट है मगर उसका इन्वेंटरी मैनेज करने के लिए, लॉजिस्टिक्स मैनेज करने के लिए, बिलिंग मैनेज करने के लिए, वेरी गुड, वेरी गुड। MBA चाय वाला सेमी ट्रेडिशनल बिजनेस है, वेरी गुड। ओके, तो मोर और लेस आपको इसका अंदाज आ गया है। हाँ बोलिएगा सर। केमिस्ट एंड ड्रग स्टोर, केमिस्ट एंड, वेरी गुड, वेरी गुड। केमिस्ट एंड ड्रग स्टोर, वेरी गुड। तो पहले क्या हुआ करता था, पहले अगर आप चिट्ठी दो तो वो पीछे जाता था और वो रैक चेक करता था ये दवाई है कि नहीं। अभी वो क्या करता है, वो डेस्कटॉप पे जाता है, दवाई का नाम टाइप करता है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस चलाने के लिए टेक्नोलॉजी का हेल्प किया है, वो बन गया सेमी ट्रेडिशनल बिजनेस, वेरी गुड। अभी थर्ड टाइप का जो बिजनेस है ना,
वो है स्टार्टअप बिजनेस। स्टार्टअप अगर आपको बनना है तो आप में 3 चीजें होनी बहुत जरूरी है। नंबर 1, आपका बिजनेस है ना टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन, टेक्नोलॉजी मतलब क्या कि आपका बिजनेस ही टेक्नोलॉजी का होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके बिजनेस में आप कोई टेक्नोलॉजी बना रहे हो या कोई प्लेटफॉर्म बना रहे हो या कोई ऐप बना रहे हो या कोई SaaS सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ये सारी चीजें टेक्नोलॉजी के अंदर आती है और ये पहला क्राइटेरिया है। अगर आपको स्टार्टअप करना है तो आपका बिजनेस टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए। नंबर 2, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपका बिजनेस इनोवेटिव होना चाहिए। इनोवेटिव, जो अभी मार्केट में सॉल्यूशंस है, अगर वो ही सॉल्यूशंस आप बेच रहे हो तो फिर इसको स्टार्टअप में कंसिडर नहीं किया जा सकता। अगर आपको स्टार्टअप बनना है तो आपको कुछ इनोवेटिव करना है। जो सॉल्यूशंस मार्केट में नहीं है या जो सॉल्यूशंस है वो अप टू द मार्क नहीं है, उसमें अगर आपने कोई चेंज ला दिया तो फिर वो स्टार्टअप में कंसिडर होगा। और तीसरी चीज, आपका बिजनेस स्केलेबल होना चाहिए। स्केलेबल मतलब क्या कि आज हम 100 कस्टमर्स को बेच रहे हैं, कल को अगर हमने 10 लाख कस्टमर्स को भी बेचना चाहा प्रोडक्ट तो भी वो आप बेच सकते हो, इस लायक होना चाहिए। ठीक है, मतलब जो स्केल हो सकता है, जो बड़ा हो सकता है, जो आगे जाके पोटेंशियल है कि ज्यादा लोग, ज्यादा कस्टमर्स को प्लेटफॉर्म पे हम लेके आ सकते हैं। अगर ये 3 चीजें आपके बिजनेस में है तो ही आपका बिजनेस स्टार्टअप कंसिडर किया जाता है। अभी इसमें एक ऑप्शन अपने को है, वो क्या है कि एक तो ये 3 चीजों में से 2 चीजें होनी कंपलसरी है, कोई भी 2 चीजें हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक नए तरीके का मोबाइल फोन बना लिया, मान लो कोई नया, इसमें कुछ इनोवेटिवनेस मैंने ला लिया या कुछ तो मैंने चेंज कर दिया जो पहले नहीं था वगैरह, जैसा भी है। तो फॉर एग्जांपल इसको मैंने एडिशनल लेंस, एक एसेसरी बनाई मैंने विच इज द लेंस फॉर कैमरा। ठीक है, तो अभी ये तो टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है मगर टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म वाला नहीं है, तो क्या ये स्टार्टअप कंसीडर किया जाएगा क्या? हाँ, इसका रीजन ऐसा है क्योंकि ये जो 3 चीजें है ना, टेक्नोलॉजी ड्रिवन, इनोवेटिव और स्केलेबल, इसमें से है ना कोई भी 2 अपने पास चाहिए। तो अगर हम कैमरा लेंस की अगर बात करते हैं तो वो 2 पैरामीटर्स में फिट होता है। एक तो स्केलेबल है कि हम ये एक बार अगर ये टेक्नोलॉजी बनाने में पैसा खर्च होगा मगर इसका रेप्लिका बनाना बहुत ईजी है। अगर हमने कोई वर्कशॉप स्टार्ट कर दिया या कोई कंपनी स्टार्ट कर दिया और इसके कॉपी बनाना इसका बहुत ईजी है, तो स्केलेबल है। और नंबर 2 इनोवेटिव है, आज तक ये हुआ नहीं था, ये हमने नए तरीके से ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। या अगर इसका टेक्नोलॉजी का अगर आपको कोई सब एग्जांपल दे दूं तो अगर मैंने ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाया जहां पे आप आपकी एक्सेल फाइल आपके पास होती है ना जिसमें बहुत सारा डेटा होता है, वो एक्सेल फाइल को अपलोड करो और वो आपको उसका डेटा एनालिसिस करके देगा एक क्लिक पे। अब ये प्लेटफॉर्म हो गया। ये 2 पैरामीटर्स पे खड़ा होता है। नंबर 1 इज स्केलेबल, तो है क्योंकि एक एक्सेल फाइल डालो या 100 एक्सेल फाइल डालो या 1000 डालो, वो प्लेटफॉर्म तो आपको रिपोर्ट बना के दे देगा, तो स्केलेबल है। और दूसरी चीज है कि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। तो ये 3 पैरामीटर्स है। अगर हमारी आइडिया इन 3 पैरामीटर्स पे खड़ी होती है तो ही हमें स्टार्टअप बुलाया जा सकता है। अभी एक कंफ्यूजन क्या है पता है कि जब भी हम सोचते हैं ना कि हमारे दिमाग में कोई आइडिया है, इस आइडिया पे कुछ करना है, एक तो पता ही नहीं होता है कि ये आइडिया को स्टार्टअप बुलाया जा सकता है। दूसरी चीज, आइडिया तो है मगर करे क्या। और
अगर किसी को बोलना है, बताना है, तो वो डर होता है कि अरे कोई आइडिया मेरा आइडिया अगर किसी ने चोरी कर लिया तो क्या हो जाएगा। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे इसको हम आगे लेके जाते हैं। सबसे पहले कोई भी चीज शुरू होती है आइडिया से। आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है, एक इनोवेटिव आइडिया आ गया कि हाँ यार, अब तक तो ये ऐसा ऐसा हो रहा है, अगर हम इसमें कुछ ऐसा चेंज ला सकते हैं तो शायद से ये अच्छा सोल्यूशन बन जाएगा, इसका अच्छा बिजनेस बन सकता है। और हम क्या करते हैं ना कि हम हमारे दिल में जो आइडिया है ना वो किसी को नहीं बताते। मैं ऐसे बहुत सारे फाउंडर से मिला हूँ जो मेरे पास आते थे और मेरे को बोलते थे कि सर हमको फंडिंग चाहिए। तो मैंने बताया किस लिए चाहिए, तो बोले हमारे दिमाग में एक स्टार्टअप आइडिया है। मैंने बोला बताओ क्या स्टार्टअप आइडिया है, तो वो नहीं बताएंगे हम। क्यों नहीं, हमारी आइडिया अगर चोरी हो गई तो इंसान फंडिंग तुमको किस बलबूते पे देगा अगर तुम आइडिया ही नहीं बताओगे। तो हर एक स्टार्टअप फाउंडर को क्या लगता है कि मेरे दिमाग में जो आइडिया आया है ना वो दुनिया का सबसे बेहतरीन आइडिया है, मगर इस दुनिया में there are 7 billion people in this world। तुम जो सोच रहे हो ना वो वही चीज 100 लोगों ने सोच ली है, 100 लोग अभी सोच रहे हैं। so your idea is not, हम जितना यूनिक उसको समझ रहे हैं ना उतना यूनिक वो है नहीं। और दूसरी चीज ऐसी है कि सबकी है ना अलग जिंदगी है, किसी के पास टाइम नहीं है कि तुम्हारी आइडिया को पकड़ के उसको चोर के उसको बिजनेस बना लेगा, इतना किसी के पास टाइम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे दिमाग में कोई आइडिया आ जाएगा ना, फर्स्ट थिंग हमको जो करना है वो है उस आइडिया को वैलिडेट करना है। आइडिया वैलिडेशन इज द फर्स्ट स्टेप व्हाट वी नीड टू टेक। बड़े बड़े शब्द है, सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा कि क्या करना है। सो आइडिया वैलिडेशन में व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू क्रिएट आइडिया वैलिडेशन का मकसद ये है कि पहले ये चेक करना कि तुमको जो प्रॉब्लम लग रहा है मार्केट में, क्या वो असल में प्रॉब्लम है क्या। कभी कभी क्या होता है कि यू ओनली थिंक इट इज अ प्रॉब्लम, रेस्ट एवरीवन पीपल अराउंड यू डोंट थिंक दैट इज अ प्रॉब्लम, ओनली यू आर थिंकिंग बिकॉज यू हैव गॉट दिस आइडिया, यू थिंक इतना बड़ा प्रॉब्लम है, लोगों को लग रहा है कुछ प्रॉब्लम नहीं। सो फर्स्ट यू नीड टू चेक whether this really a problem in the market, and how do we check it? एक तो you go to 100 people which are in your network, 100 people around you, that can be your professors, that can be people you know who are experts in various subjects, that can be business owners in your network, that can be anyone adult in your family। दोस्तों को बताओ, मगर दोस्त अपने कैसे ना कि अरे मस्त आइडिया मस्त आइडिया चलो चाइनीज भेल खाने जाए, दे आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट द आइडिया। मगर फिर भी यू थिंक इफ यू हैव सम सीरियस फ्रेंड, यू गो टॉक टू हिम, यू टेल अबाउट योर आइडिया एंड यू टॉक टू 100 people, 100 people मिनिमम 100 लोगों को अपने आइडिया बताओ एंड गेट द रिव्यूज ऑन द आइडियाज। व्हाट डू यू थिंक this is really a problem in the market? Do you think there is some solution which has to be created? Do you think what kind of solution to be created? You ask to 100 people around you, and that is how you validate your idea। आइडिया को सिर्फ अपने पास रख के वैलिडेट नहीं होता है, हमको लोगों से बात करना पड़ेगा, लोगों को पूछना पड़ेगा। तो एक तो you can go and physically talk to people, or you can create some kind of Google form। एक Google form बना लिया या marketing form बना लिया, and you send it to all your friends around you and people around you, and you tell them to fill the form। Once you have that form, that is your market analysis, initial market analysis कि जो मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ that is not only I am not telling there is a problem, people think that this is a problem and there is no solution for the problem। So what you do is you have that market analysis in your hand। Now जो लोगों ने तुम्हारी आइडिया की वाहवाही की है ना, जो लोग बोले ना कि ये मस्त आइडिया है, there has to be some kind of solution for this, and you tell them what your solution is, what is the idea in your mind। ये मेरे दिमाग में है, ये प्रॉब्लम का ये solution मुझे
बनाना है. And initially, in order to start a business, we don't need the final. ऐसा नहीं होता है. शुरुआत में हमको क्या बनाना है? हमको बनाना है प्रोटोटाइप. प्रोटोटाइप का क्या मतलब है? प्रोटोटाइप मतलब we need to create a demo of what the product is. डेमो. एक्चुअल प्रोडक्ट बनाने के 10% से भी कम पैसा खर्च होना चाहिए. So for example, if you want to make something and the final product will cost you 1 lakh rupees, आपको 10,000 रुपए में जुगाड़ लगा के हेल्प, बैग, फ्रेंडशिप सब कर करके, दोस्ती यारी इधर से जो हेल्प मिलेगी सब लेके आपको एक प्रोटोटाइप डमी प्रोडक्ट बनाना है बस. ठीक है. अभी प्रोटोटाइप बनाने के लिए अगर आपके पास पैसे हैं, वेरी गुड. अगर आपको घर से पैसे मिलते हैं, अमेजिंग. अगर नहीं मिलते तो देयर आर 3 काइंड ऑफ पीपल हु विल हेल्प यू. 3 F. फर्स्ट F इज फ्रेंड्स, दोस्तों से उधार मांग लो. सेकेंड, फैमिली, you take money from your family. And number 3, fools. Fools is because, why I say fools is, जो लोगों ने तुम्हारे आइडिया की वाहवाही की है ना कि सर ये, अरे यार ये तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है सर, तुम मेरे को थोड़ी मदद कर दो, आई वांट टू क्रिएट अ प्रोटोटाइप. ऐसा कर करके जुगाड़ कर करके किससे कुछ टेक्निकल हेल्प ले ली, किससे कुछ और हेल्प ले ली, ऐसा कर करके हमने एक प्रोटोटाइप बना लिया. अभी once you make the prototype ready, the next step is you have to test this in the market. ठीक है. अभी क्या हो जाता है ना कि when you have to test in the market, we don't know who is our ideal customer. Okay, कि इसको टेस्ट कहाँ पे करें, कौन से लोगों के साथ करें, ये बराबर बना है कि नहीं बना है. Do I have the expertise about how to test this market how to test the product in the market. Next is, if I am making a tech product and if I require web service, web space, that is all expensive thing ना. web space लेना, ये तो उतना भी पैसा नहीं है अभी हमारे पास. हमको ये टेस्ट करने प्रोडक्ट क्या करेंगे, हमको मेंटोरिंग चाहिए. ये सारी चीजों का जवाब हमको एक जगह पे मिल जाएगा. एंड दैट प्लेस इज कॉल्ड ए इंक्यूबेशन सेंटर, स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर. What you need to do is you need to go and visit those incubation centers and go meet with people of incubation centers, show them your prototype, tell them about what your idea is. नोट कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाना कि ये मेरा आइडिया है वगैरह वगैरह. यू गो टॉक टू देम, शो देम योर प्रोटोटाइप. इंक्यूबेशन सेंटर क्या करता है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ. इंक्यूबेशन सेंटर आपके आइडिया वैलिडेशन में हेल्प करता है. इंक्यूबेशन सेंटर आपको मेंटोरिंग सपोर्ट देता है. इंक्यूबेशन सेंटर आपको सारे रिसोर्सेज ओपन करके दे. इंक्यूबेशन सेंटर्स हैव पार्टनरशिप विद गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, जितने बड़ी कंपनीज है, जोहो, ये सारी बड़ी कंपनीज के साथ उनकी पार्टनरशिप्स होती है. तो आपको टेक्नोलॉजी हेल्प करने, टेक्नोलॉजी जो उनकी है वो मिल जाती है हेल्प तुम्हारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए. यू गेट ए चांस टू स्पीक विद एक्सपर्ट्स. तो वो एक्सपर्ट्स के साथ अगर आपको बात करना है वो हो जाता है. दे हेल्प यू. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एक प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, वो टेक प्रोडक्ट हो सकता है, फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है, तो मैं प्रोडक्ट एक्सपर्ट, ठीक है. वो प्रोडक्ट कैसे बनाना है, वो सोल्यूशन कहाँ पे यूज होगा, कैसे यूज होगा, मुझे ये पता है. मगर कोई भी बिजनेस या कोई भी स्टार्टअप सिर्फ प्रोडक्ट पे नहीं चलता है. हमको उसके अराउंड एक बिजनेस मॉडल चाहिए कि बनाने में कितना पैसा लगेगा, मार्जिन कितना होगा, स्केल कैसे होगा,
बिजनेस ग्रो कैसे होगा, टीम कितने की लगेगी, ये बिजनेस सस्टेन कैसे होगा, प्रॉफिट्स कैसे बनेंगे, इन्वेस्टर्स कैसे आएंगे, ये सब करने के लिए तुमको एक बिजनेस मॉडल की जरूरत है। और एक इंसान जब एक फ्रेश फाउंडर होता है ना, उसको ये बिजनेस मॉडल वगैरह कुछ नहीं पता है। सो यू ओनली नो अबाउट योर प्रोडक्ट। The incubation center helps you to create a business model around that. ठीक है? So this all help you will get at incubation center, and at the same time, incubation center also has collaborations with various government funds. So for example, if you need funding for your project, if you want to scale the business, अभी मैंने एक प्रोटोटाइप बनाया है, मुझे अभी एक फाइनल प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है? फाइनल प्रोडक्ट बना के मैं इसको पहले टेस्ट करूंगा मार्केट में और फिर इसको ग्रो करूंगा। ये प्रोसेस के लिए भी पैसा लगेगा। वो पैसा तुमको इंक्यूबेशन सेंटर्स के थ्रू मिल सकता है। देयर इज ए चांस वेयर यू कैन गेट द फंडिंग बिकॉज इंक्यूबेशन सेंटर्स have various connects with various schemes. They understand different schemes and they can also suggest you what is the scheme which you should apply for. So under government provisions, for example, अगर हम निधि SSS करके एक फंड है जिसमें आपको 20 लाख रुपए मिलते हैं सिर्फ प्रोटोटाइप डेवलप करने के, ठीक है? जो मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट है उसको डेवलप करने के 20 लाख रुपए तुमको मिलते हैं। या फिर स्टार्टअप इंडिया की कुछ स्कीम्स है जहाँ पे आपको फंडिंग मिलती है। तो ये सारी फंडिंग है ना, आप खुद गवर्नमेंट का दरवाजा खटखटा के मुझे फंडिंग तो ऐसा नहीं कर सकते। द प्रोसेस इज टू गो थ्रू इंक्यूबेशन सेंटर्स बिकॉज इंक्यूबेशन सेंटर्स हैव द अथॉरिटी टू गिव दैट मनी टू स्टार्टअप्स। तो एक तो ये होगा सीड फंड कैसे हमको ये करना है, तो ये हमको इंक्यूबेशन सेंटर में मिलेगा। कभी मिलेगा जब भी हम प्रोटोटाइप लेके जाएंगे, ठीक है? Or at the same time, they will also help you create a business model. They will also give you mentoring. They will also give you co-working space. They will also give you all the facilities. They will also give you labs. They will also give you Amazon credit points, Google partnerships, and all of the partnerships they have. Now, once your prototype को तुम incubation center में लेके गए and you are developing the prototype, you are making the final product. फाइनल प्रोडक्ट ऐसे नहीं होता कि प्रोटोटाइप का नेक्स्ट द स्टेप इज प्रोटोटाइप तुम मार्केट में लेके जाते हो, यू टेस्ट विद पीपल, यू गेट ए फीडबैक ऑफ देम, देन यू इंप्रूव द प्रोटोटाइप, देन यू अगेन टेस्ट इट ऑन पीपल, देन यू अगेन गेट सम काइंड ऑफ फीडबैक, देन यू अगेन। तो वो एक बार में नहीं होगा, यू हैव टू लॉन्च योर प्रोडक्ट 10 टाइम्स, यू गेट ए फीडबैक एंड देन by the end of the year, end of 2 years, you have a proper final product in your hand which is ready to go into the market, okay? And that final product what you have in your hand is called minimum viable product, MVP. ये सारे जो कीवर्ड्स है ना, इनको बस नोट कर लो, क्योंकि कल को अगर आपको कोई आके पूछता है कि आपका MVP रेडी है क्या, आपका प्रोटोटाइप रेडी है क्या, आपका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट रेडी है क्या। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मतलब ये जो प्रोसेस है ना, फ्रॉम प्रोटोटाइप टू MVP, यू गेट ए प्रूफ ऑफ व्हाट योर कॉन्सेप्ट इज। प्रूफ एज इन ये चलेगा मार्केट में, इसका प्रूफ मिल जाता है। तो इसको कीवर्ड्स में बोलते हैं POC। So I have a POC that my product will work. I also have an MVP in hand. तो जब भी आप इस तरीके के शब्द बोलते हो ना, तो लोगों को लगता है कि हाँ यार, ये इंसान को पता है कि ये क्या बोल रहा है। और इसलिए मैं जानबूझ के I am trying to explain all the difficult words in a very simple language. Okay, so once you are ready with an MVP in your hand, that is the time. MVP is once you are ready with the final product in your hand. Now you have to scale the business. The product is ready now. अभी इसको मैं ऑडियंस तक लेके जाऊंगा, अभी मैं इसको बेचूंगा। तो अभी बेचना अगर मुझे है तो the biggest expenses what I have in if I want to enter the market is branding and marketing expense. एक तो वो है। Number 2 is
I have logistical expense. Logistical expenses is if I have a tech product, तो वो टेक को चलाने के लिए भी तो पैसा लगता है. एक तो वो पैसा मुझे लगेगा, और दूसरी चीज क्या है कि अगर मेरा फिजिकल प्रोडक्ट है तो फिर उसकी कंपनी अगर सेटअप करनी है तो वो कंपनी में लोग काम करेंगे, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, उसका रेंट होगा, ये सारी चीजें प्रोडक्ट बनाने में पैसा लगेगा. ठीक है, तो दैट एक्सपेंसेस आई हैव. थर्ड बिगेस्ट एक्सपेंसेस इज एम्प्लॉइज. आई विल नीड सम काइंड ऑफ टीम जिसको मुझे हायर करना पड़ेगा और जिनसे मुझे काम करवाना है, जिनको समझाना है, सिखाना है. तो ये सब के लिए आई विल नीड फंड. दैट इज वेयर एंजल इन्वेस्टर्स कम इनटू द पिक्चर. सो सीड फंडिंग जो हमको प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए पैसा मिलता है, दैट फंड इज कॉल्ड सीड फंडिंग. सीड फंडिंग. सीड फंडिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने अभी बीज बोए हैं. ठीक है, वो बीज लगाने के लिए पैसा मिलता है. So that fund is seed funding. Second set of funding is angel fund. आपका MVP ready है, now you want to get into the market. Seed funding से भी आप थोड़ा सा मार्केट में गए हो, मगर अभी आपको स्केल करना है, आपको ग्रो करना है, ज्यादा लोगों तक पहुंचना है. That is the time when you go to an angel fund and approach for an angel funding for your business. आप एंजल फंड में जाते हो और उनको आपका MVP बताते हो, आपका प्रोडक्ट बताते हो, आपके प्रोडक्ट का पोटेंशियल बताते हो, आपका बिजनेस मॉडल क्या है ये बताते हो, और बोलते हो मुझे इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए फंडिंग की जरूरत है. आई नीड एंजल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन माय बिजनेस. ठीक है, बेस्ट पार्ट इसका ऐसा है कि जो इंक्यूबेशन सेंटर्स होते हैं, they have collaborations with various angel funds. It is good for angel funds also, क्योंकि अगर कोई भी टॉम डिक एंड हैरी अगर वो किसी एंजल फंड के पास जाता है और बोलता है मुझे फंडिंग चाहिए, तो देन दे हैव टू सिट फॉर ऑल द ड्यू डिलिजेंस. तुम्हारा आइडिया कैसा है, टेस्ट किया है क्या, वगैरह वगैरह, पूरा ड्यू डिलिजेंस करना पड़ता है. मगर द रीजन व्हाई दे कोलैबोरेट विद इंक्यूबेशन सेंटर्स इज इंक्यूबेशन सेंटर हैज ऑलरेडी वैलिडेटेड द आइडिया. ये आइडिया अच्छा है, उनके साथ इंक्यूबेशन सेंटर ने 1-1.5-2 साल काम किया है, सो दैट एंजल इन्वेस्टर्स आल्सो हैव सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि चलो अगर इंक्यूबेशन सेंटर से अगर कोई आ रहा है तो ढंग का ही होगा. So that is the reason why angel funds have partnerships or collaborations with incubation centers. Now, the best part about this is when you want to raise your first set of funds, that is angel fund. अगर आप एंजल सीरीज रेज करना चाहते हो तो इंक्यूबेशन सेंटर्स भी आपको उस पर भी सपोर्ट करेंगे कि वो एंजल फंड्स के साथ आपको इंट्रोड्यूस करवा के देंगे. दे विल help you how to pitch in front of investors. They will help you to do the due diligence. To a certain extent, they will also talk to your investors, about the idea what you have and the kind of work that you're doing. और आपको एंजल फंड मिलता है ये सारी चीज़ों के लिए, मार्केटिंग, कंपनी सेटअप, टेक्नोलॉजी चलाने के लिए जो पैसा लगता है, टीम बढ़ाने के लिए. That is when you raise the first set of your funds. Now, what do you do with this angel fund? ये angel fund के साथ once you get the angel fund from an angel, once you get an angel investor from an angel fund, he or she will put some money into your business. अभी उसका average जो ticket size है ना, average ऐसा कंपलसरी नहीं है कि इतना ही डालेंगे और इतना ही डालेंगे, मगर एवरेज मैं आपको बताता हूँ समवेयर अराउंड 50 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए के बीच. एंजल राउंड जो होता है वो 50 लाख रुपए से 5 करोड़ रुपए के बीच में होता है. उसके बीच में वो कुछ जो भी आपका फिगर, जैसे जितनी आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट है उतना दे आर गोइंग टू पुट मनी इनटू योर बिजनेस. विद दैट मनी व्हाट यू डू इज you get your first set of customers. First set of customers मतलब अगर आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हो तो उसके लॉन्च करने के बाद डायरेक्टली पूरी दुनिया में नहीं जाओगे.
पहले तुम्हारा फर्स्ट सेट ऑफ कस्टमर्स क्या होगा, शायद मुंबई हो सकता है, या योर फर्स्ट सेट ऑफ कस्टमर्स कैन बी जो भी आपका, जो भी आपको जोग्राफिकल वाइज हो सकता है, या जेंडर वाइज हो सकता है, या आपका फर्स्ट सेट ऑफ कस्टमर्स क्या रीजन वाइज हो सकता है। जो भी आपके प्रोडक्ट के लिए पहले 10,000 कस्टमर्स जहां से आपको पहले मिलेंगे, दैट इज योर फर्स्ट सेट ऑफ कस्टमर्स दैट यू विल अचीव विद दिस एंजल फंड। ठीक है, और आप उनको जब भी आप एट स्केल बिजनेस करते हो, अभी आपके पास 10,000 15,000 20,000 कस्टमर्स है, तो उस टाइम पे डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो हाई वॉल्यूम बिजनेस है। हाई वॉल्यूम बिजनेस मतलब 100 ही कस्टमर है मगर 1-1 करोड़ का बिजनेस करने वाले हैं। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिसमें प्रोडक्ट ही 50 रुपए का है, तो वो 50,000 कस्टमर्स है मगर प्रोडक्ट की साइज, प्रोडक्ट कॉस्ट बहुत कम है। तो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। मगर जो आपका फर्स्ट सेट ऑफ कस्टमर्स है, आप उन तक जाते हो, वहां पे आपका रियल प्रोडक्ट टेस्ट होता है कि आपका प्रोडक्ट जब भी स्केल में जाता है, फिर लोग कैसे कैसे क्वेरीज पूछ रहे हैं, लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लोगों को और इसमें क्या फीचर्स चाहिए, एंड साइमल्टेनियसली आप आपके कस्टमर्स तक भी पहुंच रहे हो और उनका फीडबैक लेके आप आपका प्रोडक्ट भी और भी उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको फाइन ट्यून करने की कोशिश करते हो। अभी एग्जांपल लेंगे, अगर मोबाइल फोन्स का एग्जांपल लेते हैं, तो मोबाइल तो बेच दिया है मगर फिर भी हर 6 महीने के बाद अपडेट आता है। क्यों? क्योंकि दे कंटिन्यूसली टेक पीपल्स फीडबैक एंड दे आर कंटिन्यूसली ग्रोइंग देयर प्रोडक्ट सो दैट कस्टमर इज क्या बोलते हैं, ही गेट्स अप टू द मार्क सर्विस रेगुलरली। That is the reason they also keep updating. Similarly, we will also keep on updating our product. And once we raise our first angel fund, we go to the market, we get a good experience, our product is set into the market, and now we want to scale it nationally or we want to scale it internationally. Whatever. अभी पहले सेट ऑफ कस्टमर्स के साथ हमने टेस्ट कर दिया है, प्रोडक्ट को और फाइन ट्यून किया है, अभी हम रेडी है टू गेट इनटू द इंटरनेशनल मार्केट और टू गेट इनटू द नेशनल मार्केट, एंड दैट इज वेयर a company called as venture capital comes into your business. अभी जब भी आप एंजल फंड रेज करते हो ना, तो एंजल इन्वेस्टर आप में क्या देखता है कि इसमें वो काम करने का पोटेंशियल है क्या, इसके प्रोडक्ट में वो दम है क्या, does this person have a burning desire, does he has expertise to work on the company, all of this because you are at that stage. incubation center से जब आप बाहर निकलते हो तो आप एक ऐसे स्टेज पे हो ना जहाँ पे आपको प्रोडक्ट के बारे में सब पता है, बिजनेस मॉडल भी आपका रेडी है मगर बिजनेस असल में करने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो वो रिस्क है ना, इन्वेस्टर के लिए भी तो वो रिस्क है कि पैसा डाले कि ना डाले, ये सारी चीजें हैं। मगर एंजल इन्वेस्टर है ना, आदमी कैसा है ये देखता है, बंदा कैसा है, या जो फीमेल फाउंडर है वो कैसी है, इज शी करेजियस, एंड अगर कुछ कल को प्रॉब्लम आ जाए तो विल शी फाइट और विल शी लीव, दिस दे चेक, कैरेक्टर ऑफ ए फाउंडर मेनली। बट when you are at a venture capital stage, there is not one person who is investing into the business. Venture capital funds are a team of venture capital funds is a big organization, a big company where the investment happens professionally as in the company invests on behalf of the investors. So investors give money to venture capital funds, venture capital funds invest into various startups. तो वहां पे they are not going to see how you are. Also एक पार्ट तो वो देखेंगे कि फाउंडर कैसा है, मगर at that level they are going to evaluate your business. इसका बिजनेस कैसा है, बिजनेस मॉडल कैसा है, फ्यूचर में कितना ग्रो होने का चांसेस है, what is the futuristic approach what he is taking, what are the additions what is going to bring into the business, how he is going into the international market or national market, what is the plan what he has made, and on that basis, on the valuation basis,
in venture capital funds invests into your business. Okay. Now after that, the venture capital के there can be series of fund. हम बहुत बार न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं series 1, series 2, series 3, series 4. So depending upon business to business, how much money do they need to grow this business? So depending upon if a founder needs only one time money, he will just be series 1. If he needs 2 times, series B, series C, series D, that can go up to G, H. So there are startups who have invested till series G, series H. And once that is done, the final stage is either there's a company, there's a thing called as private equity. एक तो दे कम इनटू द पिक्चर. प्राइवेट इक्विटी क्या करती है कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन जो आपका स्टार्टअप ही खरीदती है. एक तो वो हो सकता है कि आपको किसी ने ओवरटेक कर लिया, ओवरटेक एज इन आपको किसी ने खरीद लिया आपका स्टार्टअप. या सेकंड चीज ये हो सकती है कि यू कैन लॉन्च योर ओन आईपीओ, यू कैन मेक योर कंपनी प्राइवेट और आप स्टॉक मार्केट में आपके कंपनी को लिस्ट कर सकते हो. हाँ, प्राइवेट इक्विटी हो गया तो आपको एक बड़ा पोर्शन मिल जाता है. आपने कंपनी बेच दी, मेजॉरिटी स्टेक दे दिया, पैसा ले लिया. एक तो वो चीज है. और प्राइवेट इक्विटी फिर उस बिजनेस को और बढ़ाएगी, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी. या अगर आपने आपके कंपनी को प्राइवेट लिस्ट कर दिया तो यू कैन रेज फंड्स डायरेक्टली थ्रू द लोकल इन्वेस्टर्स. स्टॉक मार्केट में जैसे कोई भी इंसान इन्वेस्ट कर सकता है, तुम्हाला आधी ते तुला आवडलेला मंगळसूत्राचा फोटो पाठव. Small investors, they are going to put money into your business. For example, हम इसमें ले सकते हैं Zomato. Zomato ने क्या कर दिया, अपने business को publicly list कर दिया stock market. आधी पाठव मला. That is the last thing. IPO उन्होंने launch किया, initial public. ह्याला मी काय म्हणतो माहिती आहे ना तुला? IPO launch करने के बाद काय म्हणतात? All the public, the local investors, they can now invest into Zomato. And as Zomato grows, this is just an example. As Zomato grows, the people, the normal investors' money is also going to grow with them. So more or less, this is the basic structure of how fundraising happens. And now it is not important for you to remember things about venture capital or angel fund or प्राइवेट इक्विटी या आईपीओ. ये सारी चीजों के ऊपर इतना एज ऑफ नाउ डोंट फोकस एज मच, बट एज ऑडियंस, एज फाउंडर्स, यू शुड नो अबाउट दिस. योर मेन फोकस शुड बी आइडिया जो है, उस आइडिया को वैलिडेट कैसे करना है, वैलिडेशन आप कैसे करने वाले हो वो. दूसरी चीज है कि उसका प्रोटोटाइप कैसे बनाएंगे, और प्रोटोटाइप बनाने के बाद आप व्हाट इज द राइट इंक्यूबेशन. हर एक इंक्यूबेशन सेंटर हर एक तरीके के स्टार्टअप्स को सपोर्ट नहीं करता है. फॉर एग्जांपल, नाउ आई वर्क एज हेड ऑफ पार्टनरशिप्स एंड कोलैबोरेशंस विद वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर्स, दैट इज CIBA. तो वी आर ए टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर. तो हम सिर्फ ऐसे बिजनेसेस को सपोर्ट करते हैं हु कम फ्रॉम ए टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड. वैसा ही एक CIBA का ही एक और एक इंक्यूबेशन सेंटर है which is in Goa. The specialization is food processing. So startups which come from a food processing background, we recommend them कि आप CIBA मुंबई में मत आओ, आप CIBA गोवा में चले जाओ. The specialty is that. Similarly, एक example दूँ तो there is a incubation center in Pune. Their specialty is कि they are experts into EV, electronic vehicles. So whatever startups that come to us that is regarding EV, electronic vehicles, हम उनको recommend करते हैं कि we are not the right person to help you. You should go and contact to this incubation center. They are experts into electronic vehicles. Now when you say experts, हम technology incubators किए क्योंकि हमारे पास वो Amazon की services, वो data servers, ये सारी चीजें हैं which are related to technology. जो गोवा का सेंटर है, दे हैव अ फूड प्रोसेसिंग यूनिट एंड फूड टेस्टिंग लैब, इसलिए दे आर एक्सपर्ट्स इनटू फूड प्रोसेसिंग. द अदर इंक्यूबेशन सेंटर व्हिच इज इन पुणे, व्हिच इज अबाउट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, दे माइट बी हैविंग ए वर्कशॉप
where you can create your own electronic vehicle, and they might be having all partnerships and all the spare parts and everything, where you can create your MVP. तो हर एक इंक्यूबेशन सेंटर की एक स्पेशलिटी होती है. आपको आपका प्रोडक्ट क्या है उसके बेसिस पे एक करेक्ट इंक्यूबेशन सेंटर को जाके पिच करना है, एंड वहां से योर जर्नी विल बिगिन, एंड साइमल्टेनियसली यू विल आल्सो लिव वाइल इंक्यूबेशन सेंटर का. और एक बेस्ट पार्ट ये है कि incubation center is a place where there are hundreds of startups working at the same time. Now what happens is, when you see other founders how they are working and how they are raising funds and how they are growing their business, similarly you learn a lot of things from other founders. So it is an ecosystem of startup founders. तो आपको अभी एज ऑफ नाउ आपसे मार्केट आइडिया वैलिडेशन, प्रोटोटाइप, इंक्यूबेशन सेंटर, और इंक्यूबेशन सेंटर से बाहर निकलोगे तभी एमवीपी आपका रेडी है. बस ये इम्पोर्टेंट चीज़ें कुछ है जो आपको एज ऑफ नाउ आपके दिमाग में रखनी है, और जो आपको आपका बिजनेस स्टार्ट करने में और बढ़ाने में बहुत मदद करेगी. I think I was given 1.5 hours to speak. It is exactly 11:59, and I want to value your time also. आप 1.5 घंटे से सुन रहे हो मुझे, so it's exact 12. Okay, thank you so much, ladies and gentlemen, for listening to me very very patiently. Thank you, sir. Actually, it was very wonderful way of narration where there was no conventional PPT and you were just narrating a story, and it was kind of a generates interest within students and listeners. And thank you. So I think we'll take some questions if there are any questions, and then we can conclude. So if there are any questions, we can put it in the chat box, or you can unmute and directly ask the questions. It's open. Is there any question? Any student? Okay. Okay, if there is no question, we can there is a question, can we get number? Okay. Number as a contact number? Contact number चाहिए? हाँ, yes. एक काम करो, I am very very active on 2 places. Number 1 is LinkedIn, very active there, and I am very active on Instagram. ये दोनों जगह पे आप फॉलो कर दो मुझे, और जो भी आपके क्वेश्चंस है आप मुझे लिंक्डइन पे भी पूछ सकते हो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो. इसका और एक बेनिफिट ऐसा है कि इफ आई एम स्पीकिंग समवेयर एल्स, यू गेट एक्सेस टू दैट, you get access to whatever we do programs in our incubation centers and all of that, what we do, you will be updated about that. तो contact number में क्या होगा ना कि there are chances कि I may not be able to do justice. अगर आपका कॉल है, मैं किसी और काम में हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ, it is better that we connect on Instagram and LinkedIn, so that the relation is for longer period of time. Okay, sir, from where we get number of incubation center, how to contact them? Google. If you Google them, मैंने तो एक एग्जांपल बता ही दिया मैंने, मैं आपको चलो 3-4 नाम और बता देता हूँ. एक तो CIBA है, CIBA इंक्यूबेशन सेंटर, which is टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर. दूसरा इंक्यूबेशन सेंटर बॉम्बे में जो अच्छा है, बड़ा अच्छा है मतलब, which are good, they have supported, that is सरदार पटेल इंक्यूबेशन सेंटर, which is in अंधेरी. The third name is IIT's incubation center, IIT मुंबई का इंक्यूबेशन सेंटर है. The name of the center is SINE, साइन. ठीक है. और एक इंक्यूबेशन सेंटर है विच इज अटल इंक्यूबेशन सेंटर. अटल इंक्यूबेशन सेंटर रामभाव प्रबोधिनी में, दैट इंक्यूबेशन सेंटर इज देयर, दैट इज इन द वेस्टर्न लाइन. तो ये 3-4 बड़े बड़े इंक्यूबेशन सेंटर्स है जो मुंबई बेस्ड है. आपको इन सब के कॉन्टैक्ट नंबर्स गूगल पे मिल जाएंगे. और दूसरी चीज ये है ना कि अगर आप इनके वेबसाइट्स पे चले जाते हो तो हर एक के वेबसाइट पे अप्लाई नाउ करके एक टैब होगा ही. Go to that apply now tab, fill out the form, whatever it is there, you put in all your information and you send it to incubation centers. So there are teams sitting in every incubation center who receive these forms and who
do the due diligence on whatever the information you have provided. ठीक है? And they will only recommend you कि आपको कौन से प्रोग्राम में जाना है. For example, if I talk about CIBA, so there are different programs. There is one is idea validation camp, one is ground zero, one is co-founders catch up. So the incubation centers will also suggest you कि okay, अभी आप आइडिया स्टेज पे हो, आप आइडिया वैलिडेशन कैंप के लिए जाओ. अभी आपका प्रोटोटाइप रेडी है तो आप ग्राउंड जीरो के लिए आ जाओ. ऐसे every incubation centers have their own various programs designed. They will recommend you what is the right way to go. Okay. What type of association is there between fundraising partner and startup founders? Profit sharing strategy. अजीम, I would request you एक बार है ना आप आपका माइक अनम्यूट कर दो और मुझे सवाल एक बार पूछ लो क्योंकि I'm not able to clearly understand your question. Yes, sir. There is a partnership who provides the financial support and to the founders. So, what kind of association is there between the founder and the fundraising company or the body? As in, I did not understand. As in, like if they are providing some support in terms of money. So, what is the the वो कुछ बीच में अपना कमीशन लेते हैं क्या ऐसा? हाँ, like commission or in what kind of वो पूछ रहे हो कि वो अगर आपको इन्वेस्टर्स जैसे इफ यू आर अभी आप एंजल पार्टनर हो सपोज, अब मुझे हम 100 करोड़ लेते हो, ठीक है, तो आपका क्या प्रॉफिट में मेरा जो है हिस्सा रहेगा, मतलब, और मेरा क्या रहेगा? ओके, तो वहाँ पे ना ये चीजें दो तीन तरीके से होती है. एक तो होता है कि कुछ एंजल फंड्स बोलते हैं कि वी विल हेल्प यू रेज फंड्स और वी विल टेक एक्सपेक्टेड इक्विटी ऑफ योर कंपनी, एनीवेयर 1% 2% जैसा भी है. एक तो वो हो सकता है, या कुछ एंजल फंड्स बोलते हैं कि वी विल टेक सम काइंड ऑफ सक्सेस फी. ठीक है, if you get an investor, we will have some kind of success fee from you or the angel fund, from the angel investor. Okay. So that is mainly ये किस लिए होता है क्योंकि angel fund को प्लेटफॉर्म पे लेके आना, फाउंडर्स को ढूंढना, फाउंडर्स का ड्यू डिलिजेंस करना, वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करना, वो मीटिंग के बाद अगर जो भी क्वेरीज है वो जैसे एक मीटिंग में तो एंजल फंड होता नहीं है, तो दे हैव टू डू मल्टीपल मीटिंग्स, दे हैव टू डू डाउट सॉल्विंग, ये सारी चीजों में दे टेक सक्सेस भी तो लेते हैं, मगर वो उसका सपोर्ट भी उतना मिलता है. अगर हम खुद से मार्केट में चले जाए ना एंजल फंड ढूंढने, एंजल इन्वेस्टर ढूंढना और वो करने में, तो आपको तो बिजनेस करना है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं. इट इज बेटर दैट वी गिव इट टू समवन प्रोफेशनल. आप हमारी फिक्स करवा के दो, यू टेक सम सक्सेस फी so that I can focus on my business. तो जो पर ईयर का 5% होता है, मतलब जैसे मैंने ओवरऑल मुझे बेनिफिट हुआ 1 CR का, तो मुझे उसका 5% उनको देना है, 10% देना है, मतलब उनके दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या होता है? इतना ज्यादा नहीं लेते हैं. अच्छा, इतना नहीं लेते. एंजल फंड्स एकदम मिनिमम परसेंट लेते हैं, दैट इज एज अ सर्विस फी. ओके, एज अ सर्विस. इन्वेस्टर होगा ना, जो एंजल इन्वेस्टर होगा, वो आपकी कंपनी में इक्विटी लेगा. अच्छा, ओके. इज इन्वेस्टिंग, मान लो 2 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है. ओके, फिर वो बोलेगा ना यार मुझे 20% स्टेक चाहिए कंपनी का, डिपेंडिंग अपॉन बिजनेस टू बिजनेस. वो एंजल इन्वेस्टर्स को हम लोग स्टेक होल्डर भी बोलते हैं क्या? स्टेक होल्डर, हाँ, स्टेक होल्डर, दे आर स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी. यस. अच्छा, ओके, हाँ, चलेगा, ठीक है. एंजल इन्वेस्टर है ना, ये पर्सपेक्टिव से आता नहीं है. ओके, आपके प्रॉफिट में से पैसा लेगा नहीं क्या? स्टार्टअप को पहले 4-5 साल है ना सिर्फ अपना बिजनेस खड़ा करने में टाइम लगता है जी. अभी शायद आपके पास 10,000 कस्टमर्स है, उसमें से जितना प्रॉफिट आ रहा है ना, उससे दुगना पैसा तो मार्केटिंग में जा रहा है. ओके, कस्टमर्स को कंटिन्यूअसली बढ़ाना है. तो 4 years down the line, 5 years down the line, the huge profit is going to come. Okay. Investor does not, venture capitals come for profits. Right. Angel investor don't come from profit. Angel investor क्या करता है पता है?
एक राइट बिजनेस देखता है कि ये बिजनेस आगे जाके बढ़ सकता है क्या, जी एंड दे नाउ दे इन्वेस्ट इनटू वो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि 3 साल बाद जब ये आप जी वेंचर कैपिटल ये करो ना, जब आप वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट लो, तो आज आपके कंपनी की वैल्यूएशन मान लो 10 करोड़ है, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, 10 करोड़ आपके कंपनी की वैल्यूएशन है, उन्होंने आपके बिजनेस में 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया और कंपनी का 20% स्टेक ले लिया। ओके अभी आपके पास 10,000 कस्टमर्स है फॉर एग्जांपल, राइट 3 साल बाद आपके पास 5 लाख कस्टमर्स हो जाते हैं, तभी आपकी कंपनी की वैल्यूएशन हो जाती है 100 करोड़ रुपए। ओके ठीक है, अभी 100 करोड़ रुपए का 20% कितना होता है? 20 करोड़ होता है। तो एंजल इन्वेस्टर ने 5 साल पहले 10 करोड़ के वैल्यूएशन पे 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए थे। आज एंजल इन्वेस्टर के 100 करोड़ के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो उसके 20 करोड़ रुपए बनते हैं। ओके ह्यूज प्रॉफिट। तो वो क्या सोचते हैं कि ठीक है, जब भी वेंचर कैपिटल आ जाएगा ना, तो मैं मेरा स्टेक बेच दूंगा वेंचर कैपिटल। ओके वो प्रेफरेंस उनके पास होता है कि पहले हम एग्जिट ले सकते हैं। तो दिस इज एंजल इन्वेस्टर्स वर अर्न मनी ऑन वैल्यूएशंस। मगर दूसरी चीज ये भी है कि एंजल इन्वेस्टर जब भी बिजनेस में आते हैं ना, वो सिर्फ पैसा लेके नहीं आते हैं, वो अपना दिमाग भी लेके आते हैं, अपना एक्सपीरियंस लेके आते हैं, अपने कॉन्टैक्ट्स लेके आते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे एक आपको कौन सा क्या एग्जांपल दो, एक मिनट। ओके, एक एग्जांपल देता हूँ मैं। तो जी एक स्टार्टअप फाउंडर आए थे। पराग सर, आई होप वी हैव टाइम सर। और यस वी कैन। एक मिनट में एग्जांपल देता हूँ सर। तो ओके सर। ए स्टार्टअप फाउंडर केम टू अस saying that I make exotic oils. Okay. Exotic oils is rose से oil बना रहे, या expensive and very flavored and that can be used to for food and everything. जो high end restaurants होते हैं ना, वहाँ पे flavor के लिए ये exotic oils use किए जाते हैं। Okay. तो he was trying to sell in the local market. We couldn't sell. तो 300 रुपए का 200 ml कौन तेल लेगा? ठीक है, वो अगर कस्टमर है तो वो 1% है ना, टॉप 1% who will buy. Yes sir. So, right. He went to an angel fund, so he approached us. That time I was working with an angel fund. He approached us, and we fixed up a meeting with an angel investor. अभी angel investor जो थे ना, he was a big guy with a background of airlines. तो उन्होंने एयरलाइंस के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम किया था, उनके कॉन्टैक्ट्स थे, अलग अलग एयरपोर्ट्स के साथ, बड़े बड़े एसोसिएशंस के साथ काम किया था। उन्होंने बोला कि देख, तू क्या अभी ऑफर कर रहा है? तू बोल रहा है कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए और यू आर ऑफरिंग 5% ऑफ द स्टेक फॉर 1 करोड़ रुपीस। ठीक है, ओके। मगर ये जो स्पीड से तू ग्रो कर रहा है ना, इसमें तुझे 4 साल निकल जाएंगे थोड़ा बिजनेस ग्रो करने के लिए। मैं अगर एंजल इन्वेस्टर आ गए तो मैं क्या करूंगा पता है तेरे लिए? मेरे सारे एयरपोर्ट्स में पहचान है, या मेरे सारे एयरपोर्ट्स में नेटवर्क है उतना स्ट्रॉन्ग। आई विल गिव यू 1 कियोस्क ऑन एवरी एयरपोर्ट। राइट, ठीक है। अभी एयरपोर्ट का जो कस्टमर है ना, वो टॉप 1% है। राइट, वहां पे सबसे ज्यादा चांसेस है कि तेरा प्रोडक्ट बिकेगा। ओके राइट, हाँ, और उसका रेट भी अच्छा मिलेगा। उसका रेट भी अच्छा मिलेगा। अब मेरा नेटवर्क उतना अच्छा है तो तुझे शायद कियोस्क में 4 पैसे और कम लग जाए। ये मैं तुझे करके, तुझे जो बिजनेस मान ले महीने के 10,000 लीटर बेचने में तुझे 4 साल लग जाएंगे ना, अगर तू इंडिया के हर एक एयरपोर्ट पे अगर तेरा कियोस्क होगा तो तू अगले 6वें महीने से बेचना चालू कर देगा 10,000 लीटर एवरी मंथ। Right. So that is the value that I will bring on table. But then I don't need 5%. I need 15% in your company for the investment that you are asking. So investor सिर्फ पैसा लेके नहीं आता है, और सिर्फ पैसा लेके आने वाला इन्वेस्टर रहेगा ना तो मत लो। Okay. पैसा तुम चाहिए वैल्यू, अपने को चाहिए कॉन्टैक्ट्स, अपने को चाहिए नेटवर्क।
अपने को ऐसा एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर चाहिए। एंजल वेंचर वाले तो फिर बात ही अलग है, वो सिर्फ कैलकुलेशंस पे होता है। एंजल इन्वेस्टर अपने को ऐसा चाहिए जो अपने बिजनेस में वैल्यू क्रिएट करे, जो अपने को लेवल 1 से लेवल 10 तक लेके जाए, अपने साथ रहे। ठीक है, और ऐसे इन्वेस्टर्स के साथ काम करने में बहुत मजा आएगा फिर तुमको। दिस पीपल आर कॉल्ड स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स। स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स, ओके। आपको अगर कोई पूछे कि आपको कौन चाहिए, स्लीपिंग इन्वेस्टर चाहिए या स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर चाहिए, तो बोलना स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर चाहिए। ओके, राइट, ओके सर, ऑलराइट। हेलो पराग सर। Yes, sir. Hello. हेलो, Yeah. am I audible sir? Yes. Sagar sir, thank you very much for such a nice talk sir. Thank you. I want to know one question sir. जैसे भी हम लोग जो है, आप जैसे बता रहे हो कि इन्वेस्टर हम लोग जो है इनके जो सिलेक्ट करते हैं, तो अगर मैं उनको आइडिया बता रहा हूँ कि आई वांट टू स्टार्ट दिस बिजनेस, तो अगर उसमें पॉसिबिलिटी है ना सर कि भाई वो बिजनेस में हम लोग को लॉस भी होने की पॉसिबिलिटीज है, तो अगर वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो यानी कौन बेस पे करेंगे, अभी वो मुझको क्लियर नहीं हो रहा। अभी सपोज जो है फ्यूचर में अगर कुछ लॉस होता है तो वो किस तरह से रिकवर करेंगे? इन्वेस्टर, एंजल इन्वेस्टर को इसलिए एंजल इन्वेस्टर बोला जाता है कि वो एंजल जैसा आता है, वो रिस्क बेयर करता है और वो इन्वेस्ट करता है। ठीक है, द रीजन व्हाई ही इज आस्किंग फॉर इक्विटी इन योर कंपनी, प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा बार्गेन करेंगे कि ज्यादा मुझे इक्विटी देना, अब वो यही रीजन है क्योंकि इसका रिस्क इन्वेस्टर्स बेयर करते हैं। 100 में से ना एक स्टार्टअप सिर्फ सक्सेसफुल होता है, मगर वो इन्वेस्टर का रिस्क टेकिंग एबिलिटी है कि हम चलो यार इन्वेस्ट करते हैं, अगर आइडिया अच्छा लग रहा है। इसलिए मैंने बताया कि एंजल फंड है ना, इन्वेस्टर ये नहीं देखता है कि तुम्हारा बिजनेस तो तुम्हारा अच्छा होना ही चाहिए, मगर इसके साथ साथ वो एज ह्यूमन बीइंग आप कैसे हो ना, ये भी टेस्ट करता है। ओके, क्योंकि चैलेंजेस तो आएंगे, ऐसा तो कोई बिजनेस नहीं है कि एक बार चल गया तो फिर तो बढ़ते दम तक चलेगा, ऐसा तो बिजनेस है नहीं, तो चैलेंजेस तो आएंगे। वैसे सिचुएशन पे क्या ये फाउंडर लड़ सकता है, वैसे सिचुएशन पे क्या ये गिव अप कर देगा, वैसे सिचुएशन पे they check all this point. यस, ये सारी जो चीजें ना पर्सनालिटी टेस्ट करते हैं इंसान का। ओके ओके, ठीक है, उसको स्ट्रेस में थोड़ा सा डालते हैं। These are all techniques what they use. They put you in a little stress just to check how you react. Okay. ये फाउंडर सुनता है कि नहीं सुनता है, ये सारी चीजें भी इन्वेस्टर्स देखते हैं। आपका सोशल मीडिया स्कैन होता है। देयर आर एंजल इन्वेस्टर के पास जो टीम है जिनका काम ये है कि आपकी पर्सनालिटी स्कैन करो। आप फेसबुक पे क्या डाल रहे हो, आपके फ्रेंड्स कौन है और आपका बैकग्राउंड क्या है, गूगल अगर आपका नाम आप करते हो तो सब पता चलेगा, आपके ऑर्कुट अकाउंट से लेके अभी लेटेस्ट पोस्ट तक। On that basis they decide. Yes, yes. Okay. और एंजल फंड का ये काम होता है। एंजल फंड जो दिस एक्सपर्टीज होते हैं, इनका ये सारी चीजें होती है, बैकग्राउंड चेक करना, ये करना, आपकी लायबिलिटी आप पे अगर कोई है क्या, आपके पास और कोई पर्सनल लोन है क्या, yes yes, सारी चीजें चेक होती है। What is your record? Yes. And all this. Yes. आपके ऊपर कोई एफआईआर है क्या, यहाँ से लेके सारी चीजें चेक होती है। Yes yes. Okay, thank you Sagar sir. Yeah. So moving ahead with the session, on behalf of Anjuman Islam's Kalsikar Technical Campus, I express my thanks to our today's guest speaker, Mr. Sagar Ranshoor sir. We wish to thank the management, our president Dr. Zahid Qazi, our general secretary Mr. J.R. Sheikh, our executive chairman Mr. Burhan Harris, and director sir Dr. Abdul Razak Khonutagi. We are also thankful to our faculty members and the people who are attending this session right now, and we announce that we conclude this session now. Thank you everyone. Can we all take a group photograph? Yes, if people get on their cameras for a moment. Yeah.
3, 2, 1. Okay. Chalo. Thank you so much for inviting me. It was a huge Okay, pleasure thank talking. you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir.